हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक्सपो 2020 जो दुबई में हो रहा है इस साल, और ये दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। तो यहाँ चलते हैं और आपको पूरी ट्रिप दिखाते हैं और मेट्रो स्टेशन भी दिखाते हैं जिससे हम आज ट्रैवल करेंगे। हमारा पहला मेट्रो स्टेशन है, तो ये मेट्रो स्टेशन होने, अगर मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ मेट्रो स्टेशन, तो आप लोग काउंट करके पूरी वीडियो में देख लीजिएगा कि हम कितने मेट्रो स्टेशन क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ से टिकट्स लेते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेट्रो के टिकट्स लेने के लिए, बिना टिकट के आप मेट्रो में एंटर नहीं कर सकते। नोल कार्ड होता है जो मेट्रो का कार्ड होता है, जो इस मशीन पे स्टैंप होता है, जो आप जैसे देख सकते हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी हम ग्रीन और रेड लाइन के इंटरचेंज में, तो अभी हम एक्सपो की ट्रेन पकड़ने वाले, तो मैं दिखाता हूँ। गैस करे मैं कहाँ हूँ। जर्मनी पवेलियन पे तो इन लोगों ने हमारे नाम पूछे, तो इन लोगों ने ये लिखा है, हमें एक कार्ड दिया जर्मन पवेलियन का। तभी मैं इसका अंदर जाके इसका यूज़ बताता हूँ आपको। जैसा आप ये चीज़ें देख सकते हैं, जर्मनी की स्पेशल चीज़ें जो जर्मनी में बनती हैं, जैसा आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। Our world is quite old. Many incredible forces have created and shaped our planet for millions and billions of years. When all of a sudden life began. And life set out to evolve through countless iterations, full of little successes and all-changing accidents. Until, at some point, we came along. Seemingly within the blink of an eye, mankind took the stage. And we began to shape the planet ourselves, fitting it best to our needs. Which is why we call this era the Anthropocene, the age of humankind. Unfortunately, some of our plans had no regard for other creatures or the planet itself. Today, our leading role and our impact raise a lot of questions. How will we generate our energy in the future? How will we protect the biodiversity? And in what kind of cities do we want to live? Campus Germany invites you to get to know the answers. Connect your minds and immerse yourself in 100,000 ideas for a better future. जर्मन के पवेलियन में आप घुस चुके हैं। जब वो हमने पूरी वीडियो देखी, तो आ जाए इसके अंदर जाते हैं।
तो ये जैसा आप देख सकते हैं प्ले एरिया, वहाँ लेटने की भी जगह ऐसी बनाई हुई है और यहाँ आर्ट स्ट्रक्चर है ड्राइंग के लिए बच्चों के लिए। ऊपर जाएंगे इधर जर्मन पवेलियन में, तो आगे चलते हैं। ये जर्मनी के पवेलियन का जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ से हमें सऊदी अरेबिया का पवेलियन नज़र आ रहा है। दूसरे पवेलियन का नाम नहीं याद। और ये एक्सपो की जो पूरी मेन एंट्रेंस है वो, तो ये देखें ये व्यू है जर्मन पवेलियन के अंदर हम घुस चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी Hi everybody, and welcome to the graduation hall. Your journey is almost complete. But before you leave, there's one last thing worth sharing. Our planet is in constant motion. It is constantly changing. And more than ever before, it's being changed by us. At the same time, we know that something is not running the way it should. Take a look around. With you, the world is sitting in this room. You all come from the most different places. And as different as you are, you all voted for the same beliefs and showed that you care. During your journey through the campus, you all voted for sustainability, responsibility. You all have voted for a world worth living in. That's your dream, my dream. And still, sometimes we feel powerless. And you're right. It's hard to change the world alone. But we don't have to. Let's try a little experiment. As we think the same way, we can move the same way. Look, you're not stuck any longer. Let's move together and inspire the people around us to move as well. Move towards your beliefs to reach a better future.
And it takes you, and each and every one of you, to inspire, to connect, and to keep moving. Thank you. बस Thank you, everyone. You may want to exit. तो ये जो मेरे पास जो ये तो कार्ड था ये वापस ले लिया, बारकोड था जिससे जैसे नाम नज़र आ रहे थे ना आपको अभी, तो ये आपके नाम दिखा रहा था पूरे पवेलियन में। जैसे मेरे अहमद लिखा हुआ था ना, तो बारकोड पीछे लगा हुआ था, तो वो स्कैन कर रहा था कि मेरा नाम आ रहा है, और वो एक स्कैनर लगे हुए जिससे नाम स्कैन हो रहा है सारे। आज के लिए बस इतना ही, तो रुकें, ये व्लॉग यहाँ नहीं ख़त्म होता, इसके पार्ट 2 आएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। जो लंबी वीडियो होती है मैंने देखा है कि लोग बोर हो जाते हैं, तो इसके मैं पार्ट 2 जल्द 2-3 दिन बाद डाल दूँगा आपके लिए, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उसमें मैं 2 पवेलियन दिखाऊँगा, स्पेन और पाकिस्तान के। तो अगर आपको मेरे अप टू डेट रहना है वीडियोज़ में क्या हो रहा है, तो मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, तो पार्ट 2 कुछ दिनों में आ जाएगा। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़। Play.